औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है वो हम पार्ट 2 नंबर थ्योरी की तरफ आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इक्वेशन दी हुई है, the synthesis of methanol is carried out at 500 Kelvin with a pressure between 40 and 100 atmospheres between 4 into 10 inches and 1 to 7 pascals and using a catalyst. The use of such conditions will affect both the rate of reaction and the equilibrium. In spaces below, explain the effect of higher temperature, higher pressure, and the use of catalyst on the equilibrium yield of methanol. Okay, when we increase the temperature, okay, increasing the temperature will shift the equilibrium to the left hand side. ठीक है, meaning over here. Equilibrium, we write equilibrium shifts to left hand side. ठीक है, okay. Now why is this? Because the forward reaction is exothermic. Because the forward reaction is exothermic. प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है. हायर प्रेशर, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड. टू राइट हैंड side. What is the explanation? Because more moles are present on left hand side and equilibrium moves to lesser number of moles. ठीक है, use of catalyst. So catalyst के लिए the yield does not change. ठीक है, catalyst में yield में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. ठीक है, why is that? Because the rate of forward reaction and backward reaction are increased by the same amount if we add a catalyst. So we add the rate of forward reaction and backward are increased by same amount. तो ये जो है ये आप ऐसे जो है वो इसके रीजंस लिखेंगे तो तब आपको इसके जो है वो 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. जी, ये कीजिए. Write the expression for the equilibrium constant Kp and state its unit. P and O bracket 4 into P H2O 6 over P NH3 4 into P O2 5. यूनिट्स क्या होंगे? P किलो pascal 10 minus 9 किलो pascal minus 1 किलो pascal 1. So kPa. What will be the effect of yield on of NO no, of each of the following? Increasing the temperature. तो इसमें हम लिखेंगे कि the yield of NO is decreased as forward reaction is exothermic. Is exothermic.
So the reaction moves to the endothermic जाएगा तो yield उसकी increase होगी. Decreasing the applied pressure, the yield of NO is increased as there are more number of moles on the right hand side. ठीक है, तो इस तरह जो है वो आपने इसको आंसर करना है. ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, ये वाला है. Methanol CH3OH can be produced industrially by reacting carbon monoxide CO with hydrogen H2. The process is carried out at 4 into 10 raised power 3 kilopascal and 1150 Kelvin temperature. State the Chatillier's principle. 2 marks है ना, तो हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे. हम लिखेंगे इसमें कि if the conditions of a system in equilibrium are changed the position of equilibrium move in a direction is to reduce that change. ठीक है, तो ये लीचैट की प्रिंसिपल. ओके, ये वही क्वेश्चन आ गया टेम्परेचर और प्रेशर वाले, तो मैं जो वो इसको स्किप कर देता हूँ. मैं कहता हूँ कि आप डायरेक्टली वो इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाएं. ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, खुद सॉल्व करें, फिर मैं जो हूँ वो आपको करवाऊंगा. तो इतनी देर में जब तक मैं नहीं करवाता, आप इसको खुद
Okay, the value of Kc is 1.44. Mixture contains 1.3. Now if you calculate the amount of moles for it in equilibrium mixture. Okay, so we say change in moles of x, x, x. Equilibrium moles 0.7 minus x, 0.7 minus 0.3 plus 0.3 plus x. Equilibrium concentration 0.7 minus x over 1, 0.7 minus x over 1, 0.3 plus x over 1, 0.3 plus x over 1. Kc की वैल्यू थी 1.44. Kc equals to CO H2O CO2 H2 1.44 0.3 x square over 0.7 minus x square. अब जो है वो हम अंडर रूट ले लेते हैं 1.2 0.3 plus x root 0.7 minus x 1.2 0.7 minus x 0.3 plus x 0.84 minus 1.2 x equal to 0. Plus x 0.54 equal to 2.2 x is 0.245 moles. So hence the answer is 0.25 moles. So 0.25 moles is the answer. This सारे प्रोसेस के जो मार्क्स हैं वो हैं 4. Can you imagine 4 marks for this easy peasy stuff? ठीक है जी. ये करें आप क्वेश्चन. तो PN2O4 PNO2 square. The number of moles of NO2 present at equilibrium. ठीक है. So 2 moles of dinitrogen tetroxide. So 2 moles of total pressure which is 1.84 moles of dinitrogen. 1.84 यानी 2 2 minus 1.84 अपने क्या आता है 2 minus 0.16 आंसर into 2 कर दो into 2 0.32 moles is the answer. Calculate the total number of moles of gas. Total number of moles. ठीक. तो देखो 2NO2 N2O4 इसके 2 मोल इसके 0 1.84 1.84 नहीं 1.84 होता है ना 1.84 मोल्स. ठीक है क्या तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4 क्या हो जाएगा 1.84 over 2.16 is equal to 0.85 and number of moles of NO2 is 0.32 over 2.16 is equal to 0.15 mole.
ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स, द मोल फ्रैक्शन जो है वो आपके पास ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज 2.16. कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस. The partial pressure of N2O4 is 0.85 into 140, 119 kilopascal. Partial pressure of NO2 is 0.15 into 140, 21 kilopascal. Value of Kp. Kp is 119 upon 21 square, 0.270 kilopascal minus 1, 0.270 Kp minus 1. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया थी, तो वेरी इजी क्वेश्चन. एंड गेस व्हाट, इसके मार्क्स कितने थे? 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन था. ये वो इसका ये बी पार्ट जो है ना, इसका ए पार्ट भी अगर मैं ऐड कर दूँ तो ये 13 मार्क्स आ जाएंगे. वो भी जो था वो इतने ही मार्क्स का था. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अब करना है, तो इसको जो है वो आप स्टार्ट करिए. छोड़ें इसको नहीं, चलें इसको करें ना जरा, फिर मैं आपको बताता हूँ. इसको करें, क्वेश्चन को खुद करें. एक सेकंड दीजिएगा, थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया, अभी मैं इसको फिक्स कर देता हूँ. सॉरी, थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था. ये जो है ना ये क्वेश्चन, इसमें मैंने भी अपनी उसमें देखा है, थोड़ा सा इसमें कुछ मिसिंग है.
लेकिन हम जो है ना वो इसका देख लें फिर भी होगा। इसमें कुछ मिसिंग है तो वो जो है वो हम क्वेश्चन पूरा नहीं कर सकेंगे। तो इसको जो है ना वो आपको ट्राई एक दफ़ा ज़रूर कीजिएगा। और ये जो है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये मैं करवा दूँ तो मेरा आपका तो आप क्या करेंगे, तो मुझे आपका भी एहसास है। तो हम जो है ना वो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, वो आपने खुद करना है। और अगर इसमें प्रॉब्लम हुआ ना तो मैं जो हूँ वो ज़रूर उसको डिस्कस करूँगा। ठीक है जी जी, मैं उसको डिस्कस तो ज़रूर करूँगा, करवाऊँगा भी, क्योंकि इसमें एमआर वाली बात आ रही है जो कि काफ़ी जो है ना वो कंफ्यूजिंग हो सकती है बहुत ही। और आगे भी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम ने डाल दिया था। तो वो आपको ट्राई कीजिएगा, उसके बाद मैं इसको खुद भी ट्राई करवाऊंगा, आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। फिलहाल ये वाला क्वेश्चन करें। And we can remember the base and its conjugate acid. Bronze Lorry base 1, which is the base is Cl negative and conjugate acid is HCl. Explain your answer. The base is Cl negative as it accepts a proton, and HCl gains a proton. Sorry, HCl donates a proton. ठीक है, तो इस पर आपने देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जो आपने करना है वो है ये वाला। कीजिएगा इसको आप। At temperature 1500 Kelvin, HCl will decompose. HCl will decompose into HCl, H2 plus Cl2. This is a 2. Calculate the amount of mole present in the equilibrium mixture. Sample 0.3 mole, 0.300. The resulting 1.5 into 10 is minus 2, 0, 0, 0 into 10 is minus 2, 1.5 into 10 is minus 2 हो जाएगा, 0 and 1.5. 0.01, 0.015, 0.3 minus answer 0.285. तो ये 1.5 into 10 is minus 2 हो जाना है। ठीक है, तो H2 is 0.015, यानी कि यही चीज़ है, और HCl is 0.285, 0.285। ठीक है, the mole fraction of each gas in the equilibrium mixture। ठीक है, 1.5 into 10 is to power minus 2, आंसर प्लस आंसर, आंसर प्लस 0.285। ठीक है, मोल फ्रैक्शन जो है वो है इनके 9/10, 1/20, 1/20। ठीक है, कैलकुलेट करके मैंने लिखी है। के पी की एक्सप्रेशन लिखनी है पी H2 इंटू पी Cl2 ओवर पी HCl स्क्वायर। ठीक है, ओके। Explain why the total pressure of the system does not need to be known for Kp to be calculated, because there are equal number of moles of gases on both sides of the
calculate the value of Kp. Kp 0.88 square, 0.66 square. The answer is 4.649 into 10 raised by minus 3. ये मोल फ्रैक्शन दिए हुए, ये मोल फ्रैक्शन दिए हुए, इनको जो है वो प्रेशर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, प्रेशर क्या है वो भी दिया हुआ है उसमें। ठीक है, ये जो चीज़ है क्वेश्चन में मिसिंग है। ठीक है, प्रेशर नहीं दिया हुआ, बट द आंसर दैट यू गेट, फाइनल आंसर इज 4.69। ठीक है, प्रेशर इसमें जो है वो नहीं दिया हुआ, कुछ क्वेश्चन में इधर भी मिसिंग है। Moving on to the next question जो मैं आपको करवाना चाहता हूँ, ये वाला है। ये वाला देखिएगा, इसमें थोड़ी सी एनर्जेटिक्स भी, एनर्जेटिक्स का भी एक पार्ट आ गया है। तो ये ए लेवल में यही होता है, आपके क्वेश्चन आएगा ना एक, उसमें से वो आपसे एक चीज नहीं पूछ रहा होगा, वो आपसे साइमल्टेनियसली कुछ 10 चीजें जो है ना वो पूछ रहा होगा। तो आपको ना सब आना चाहिए। ठीक है, तो if the delta is 124, the enthalpy change of formation of PCl3 माइनस 320 है, इसकी डेल्टा एज आप फाइंड करनी है, इसकी प्लस 124। तो प्लस 124 माइनस डेल्टा एच माइनस 320, डेल्टा एच माइनस 444 किलो जूल पर मोल। ठीक है, सिंपल सिंपल सीधा इधर लिख लेते हैं -444। State and explain the effect of increasing temperature on the rate of decomposition of PCl5. The rate will increase as collisions between molecules increase। इसके दो मार्क्स हैं। अब इसके आप सोच रहे होंगे हमने एक सेंटेंस लिखा है, इसके दो मार्क्स कैसे हैं? तो इसके दो मार्क्स इसलिए हैं, between molecules increase and particles have higher energy। अब इसके दो मार्क्स डिवाइड कैसे हुए हैं? The rate when collision between molecules increases और higher energy, ये दो बात है। ठीक है, state and explain the effect of temperature on the percentage of PCl5 that decomposes। The percentage the percentage decomposition of PCl5 increases as the forward reaction is exothermic। The percentage decomposition of PCl5 increases as forward reaction is endothermic। ठीक हो गया। Explain the meaning of the dynamic equilibrium and the conditions necessary for dynamic equilibrium is equilibrium. Dynamic equilibrium is achieved when rate of forward reaction and backward reaction are equal। ठीक है, it takes place in a closed
container. ठीक है. Calculate the partial pressure of phosphorus chloride in this equilibrium mixture. इक्वेशन लिखते हैं PCl5 PCl3 plus Cl2 when 2 moles of PCl5 is 0 1 into the resulting equilibrium is given as 0.8 mole 0.8 0.8 0.8 1.2 0.8 partial pressure of PCl5 1.2 over 1.2 plus 0.8 plus 0.8 2.8 मोल फ्रैक्शन हमने लिखा मल्टीप्लाई करते हैं टोटल प्रेशर से तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 आंसर क्या आता है 4.29 into 10 raised power 4 Pascal. Write the equilibrium expression for equilibrium constant Kp. Partial pressure of PCl3, partial pressure of Cl2, partial pressure of PCl5. ठीक है. अच्छा जी. Kp 28.57 into 10 raised to 3. Partial pressure of उसका फाइंड करने PCl3 और Cl2 का तो वही यही आता है. ठीक है जी. 4.29 into 10 raised to 4. ठीक है. तो इसका जो आंसर है वो होगा 1 into 10 raised to 4 Pascal. 1.91 into 10 raised to 4 Pascal. जी. तो अब जो है वो आपका ये वाला क्वेश्चन है तो बताइए इसको जरा खुद ट्राई करें तो फिर मैं बताता हूँ. ट्राई करें इसको. Legendary Mercedes 6.9 sounds. जी. SO3 is produced by the reaction between SO2 and O2 in the contact process. A dynamic equilibrium is established. Explain why the increasing the total pressure and constant temperature at constant increases the rate of production of SO3 and increases the yield of SO3. Okay. So why is it
I'm just gonna speak and not gonna write. Okay. We have done this several times. We've been doing it for the past half an hour, 1 hour. देखिए मॉलिक्यूल्स जो भी मॉलिक्यूल्स हैं ठीक है they get closer together ठीक है increasing the total pressure ठीक है so the frequency of collisions increases hence the rate also increases. In case of yield there are fewer molecules on the right hand side so the equilibrium shifts towards the right hand side hence more product is formed ठीक है तो yield जो है वो उसकी ज्यादा हो जाएगी ठीक है बस ये है the graph shows the concentration of all three species in the system changes with time for a typical reaction mixture. The gradients of all three lines decrease with time and then level off in this dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium is achieved at this point. Okay. Explain why the gradients of SO2 and O2 line decreases with time. Hmm. Because decreasing reactant concentrations. The reactant concentration decreases. Explain why all these three lines became horizontal. Because equilibrium is established. Equilibrium is established as rate of forward reaction and backward reaction are equal ठीक है तो वो हॉरिजॉन्टल हो गई है लाइन suggest a reason why the initial gradient of the SO2 line is steeper than that of the O2 line so we can say that रेशियो में फर्क है कि there is a difference in the ratio 2:1 है इक्वेशन में SO2 जो है वो 2 है और O2 जो है 1 है सो ये भी हो सकता है तो हम ये इसको जो है वो इस तरह लिख सकते हैं केसी की एक्सप्रेशन लिखें सो 3 2 SO2 square O2 calculate the amount in moles of SO2 and O2 gas in the equilibrium mixture ठीक है तो we write over here 2SO2 plus O2 gives us 2SO3 initially 2 moles of SO2 and 2 moles of O2 are present और इसके 0 at equilibrium 1.98 moles of SO3 are present 98 हो जाएगा this becomes 0.99 0.98 0.0201 तो SO2 के 0.02 तो 1.01 ठीक है अच्छा जी अब जो है वो केसी की एक्सप्रेशन लिख लेते हैं अच्छा वॉल्यूम क्या है इसमें ये तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फाइंड करने वॉल्यूम भी चाहिए तो वॉल्यूम जो है वो आपके पास है कहाँ गया ये 40 डीएम क्यूब ठीक है तो we say 1.98 over 40 square over 0.02 over 40 square into 1.01 40 88 into 10 is per 4 mole dm cube 3.88 into 10 is per 5 mole minus 1 dm cube ठीक है अगला कौन सा क्वेश्चन है भाई बस ठीक है
ओके, इक्विलिब्रिया की जो वर्कबुक है वो फिनिश हो गई है और दैट वाज इट फॉर दी दैट वाज इट फॉर द इक्विलिब्रिया वर्कबुक टॉपिकल। और नेक्स्ट टॉपिकल में जो है वो आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदन वाकई लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ यू आर new on our channel, please like the video, comment, share and subscribe as well. अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वाकई लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।